Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Solutions Online. Today we are going to do Unit 5 Chemical Bonding from Class 9 Chemistry, and in this video we will go through the exercise MCQs and question number 2 in a clear and easy way, so you can understand every concept and prepare perfectly for your exams. So let's get started. MCQ number 1 is, which of the following atoms will form an ion of charge -2? हमारे पास कुछ एटॉमिक नंबर और नंबर गिवन है, हमने वहां से आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि और एटम्स बनाते क्यों हैं आयंस। एटम्स आयंस इसलिए बनाते हैं सो दैट दे बिकम स्टेबल। स्टेबिलिटी मीन्स having a complete outer shell of electron, usually 8 electrons, that is octet rule, or 2 electrons, that is duplet rule. To achieve this stability, atom may lose electron to form positive ions, ठीक है, cations, gain electrons to form negative ions, anions, or share electron, form covalent bond. So in this example, the correct answer is atomic number 8, which is oxygen, because oxygen has 8 electrons, 2 in the first shell and 6 in the second shell. It needs 2 more electrons to complete its outer shell, which is 8 electron, which will be 8 electrons, ठीक है. So it gains 2 electrons, forming O2 negative, मतलब O के ऊपर negative 2 charge आएगा. A negative anion or anion. So next is, which of the following atoms will not form cation or anion? इनमें से कौन सा है जो anion या cation मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। atomic number 18, which is argon, because it already has full outer shell. It is a noble gas. अगर हम करें तो 2, देन हम करें पहले वैलेंस शेल में इसके 2 आएंगे, नेक्स्ट वैलेंस शेल में इसके 8 आएंगे, अगले में भी इसके 8 आएंगे, ठीक है। 2, 6 and 10, अगेन माय मिस्टेक, ओके। तो इसमें क्या है, ये क्या है, आर्गन है, ये नोबल गैस है, इट इज ऑलरेडी स्टेबल, सो इट डज नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। Which of the following atoms will form cation? इनमें से कौन सा है जो cation बनाएंगे, कौन सा एटॉमिक नंबर है जो cation बनाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। It will be atomic number 20. Atomic number 20 कौन सा एटम है, कैल्शियम, because it has 2 electrons in its outer shell. It can मतलब 2, 6, then 10, फिर उसके सबसे आउटर शेल 4 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और Ca पॉजिटिव 2 चार्ज बना देगा, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स ओबे डुप्लेट रूल? इनमें से कौन सा एटम है जो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। बेसिकली डुप्लेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल मतलब हमने अभी भी पढ़ा कि एटम्स गेन करते हैं, लूज करते हैं या शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल मोस्ट शेल और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, मींस या इधर इट विल बी ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। तो यहाँ पे डुप्लेट रूल की बात हो रही है कि some atoms like hydrogen and helium only need 2 electrons in their outermost shell for stability. तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा इनमें से मौजूद है, हाइड्रोजन और हीलियम में से हाइड्रोजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन, H2। बुक पे मिस प्रिंट हुई हुई, वहां पे बी और सी बोथ ऑप्शंस आर F2। हम इसको करेक्ट कर लेंगे, हमारा करेक्ट ऑप्शन भी क्या है, हाइड्रोजन है, सो हम इसको H2 कर लेंगे खुद ही। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज मतलब इसमें वैसे हम अभी फर्दर डिस्कस भी कर लेते हैं कि ईच हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद अदर हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से दोनों हाइड्रोजन के पास कितने होंगे,
2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस तरह से ये डुप्लेट रूल अचीव कर लेगा और खुद को स्टेबल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 4A। सिलिकॉन ग्रुप 4A से बिलोंग करता है। इट हैज blank electron in its valence shell. Of course, it will have 4. The valence electrons are the electrons in the outermost shell, and they decide how atoms react or bond with other. ठीक है, यहाँ पे ग्रुप नंबर is always equal to name of valence electrons for main group elements. So silicon, which is group 4A, has 4 valence electrons. Next is phosphorus belongs to third period of group 5A. Group क्या है? 5A है और period कौन सा है? Third. How many electrons it needs to complete its valence shell? It will be 3. Phosphorus has 5 electrons. To make it 8, it will need 3 more electrons. To forms 3 covalent bonds. For example, हमारे पास NH3 आता है, इसी तरह से हम फास्फोरस का भी बना लेंगे, ये 3 मोल को वो बॉन्ड बनाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम एटम लूजेस ब्लैंक इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? हमारे पास फ्लोरीन के 3 एटम्स है, मींस एल्यूमिनियम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। Okay, next is which of the following is not true about formation of Na₂S? सोडियम सल्फर का बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अब इसको अगर हम देखते हैं तो each sodium atom loses 1 electron. यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि each sodium atom loses 1 electron. Yes, this is true. Sodium forms cation. ठीक है, यस, सोडियम फॉर्म्स कैटायन। सोडियम के ऊपर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज मींस कैटायन। सल्फर फॉर्म्स एनाइन। यस, दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये गेन करेगा। ईच सल्फर एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू के सोडियम लूज करेगा ईच और सल्फर ईच गेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई करना है NaCl के बीच में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के H2O और KF के बीच में। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? वाटर में हमारे पास क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड फाउंड इन वाटर. In water, oxygen share electrons with hydrogen atoms. No ions are found. It is a covalent compound. Question number 2, which are short questions. State octet and duplet rule. हमने octet और duplet rule को अभी MCQs में भी डिस्कस किया, यहाँ पे अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने स्टेटमेंट देनी है। The octet and duplet rule are principles used to explain the stability of atoms and ions based on their electron configuration. Basically, हर atom अपने आप को stable करता है on the basis of their electronic configuration. और के valence shell में मौजूद electrons या तो either they must be 8 or 2 so that they can be stable. ठीक है, तो हमारे पास octet rule है। octet क्या होता है? 8. Octet rule states that atoms, for example sodium, tend to gain, lose or share electrons in such a way that they achieve a full outer shell of 8 electrons. This is octet rule. Duplet rule में क्या आता है? Duplet rule is similar to the octet rule but applies specifically to the elements, for example hydrogen or helium, with only 1 electron shell. It states that these elements achieve stability by having 2 electrons in their outermost shell. हाइड्रोजन क्या करता है? दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह से दोनों के आउटर मोस्ट शेल में क्या आ जाते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, सॉरी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स. 2 नाइट्रोजन एटम्स each have 5 valence electrons. To fill their outermost shell, they need 8 electrons. So they share 3 pairs of electrons.
forming a triple bond. This sharing creates stable N2 molecule, which each nitrogen achieving a full outer shell of 8 electrons. हमें सामने नजर आ रहा है कि सोडियम के नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको 8 करना है, तो दे बोथ नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करेंगे, ट्रिपल बाउंड बना लेंगे, इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे और दैट्स हाउ दे विल मेक अ स्टेबल N2 molecule which is very stable. You have to draw this bonding for the marks. Next is how does aluminium form cation? Aluminium cation कैसे बनाता है? Aluminium forms a cation by losing electron. Aluminium has 3 valence electrons. To achieve a stable electronic configuration, aluminium loses these 3 valence electrons. By loses these 3 electrons, aluminium becomes a positively charged ion with a +3 charge, written as aluminium +3. Next is how does oxygen form anion? ऑक्सीजन एनाइन कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे होता है? ऑक्सीजन फॉर्म्स एन anion by gaining electrons. Oxygen has 6 valence electrons. To achieve a stable electronic configuration, oxygen gains 2 additional electrons. By gaining 2 electrons, oxygen becomes a negatively charged ion with a -2 charge, written as O-2. Next is draw electron cross and dot structure of H2O molecule. हमने इलेक्ट्रॉन क्रॉस भी मेंशन करने हैं और डॉट स्ट्रक्चर मेंशन करना है H2 molecule का. We can see oxygen has we know that atom can gain, lose or share electrons. Let's discuss H2O water. Water is formed when one oxygen atom combines with 2 hydrogen atoms. Oxygen has 6 valence electrons and each electron has 1 valence electron. Each hydrogen needs 1 more electron to fill its shell, which can only hold 2 electrons. Oxygen needs 2 more electrons to reach 8. So what happens here? Each hydrogen atom shares its 1 electron with oxygen, जो हमें क्रॉस नजर आ रहा है, and oxygen shares 1 of its electrons with each hydrogen. उस तरह से जब वो दोनों के साथ 1 ईच शेयर करेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. This type of sharing of electron is called covalent bond. So if we draw it, the oxygen is in center. Oxygen को हम सेंटर में रखेंगे, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको 2 चाहिए होंगे. Each hydrogen is attached by a pair of shared electron, 1 electron from hydrogen and 1 from oxygen. Oxygen still has 2 lone pairs of electrons that are not shared. So the dot and cross diagram looks like, हमें सामने नजर आ रही है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का इंडिपेंडेंट नजर आ रहा है एक दोनों तरफ, और इधर से ऑक्सीजन के भी 4 इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं. ऑक्सीजन भी 2 शेयर कर रही है और ईच हाइड्रोजन भी एक शेयर कर रही है. सो वेयर द डॉट्स एंड क्रॉसेस रिप्रेजेंट शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है. Okay, this structure shows that oxygen and hydrogen share electrons to form stable molecule. I hope you understood this structure. So that's all for today's video on chemical bonding, exercise MCQs and question number 2. I hope everything is now clear and easy for you to remember. Don't forget to like, share, subscribe for more class 9 chemistry lectures. See you in next video. AlF₃.